to write if statement. So if will be used as a keyword. So the compiler will understand that we are going to start if statement, and there will be a condition then. Okay. So anything, I mean, the condition is usually a comparison of variables or constants or whatever, I mean, for of numbers. So there will be a condition specific. What are those conditions? We can use assignment operator there, greater than, less than, greater than, equal to, or less than, equal to, and so on. Okay, so these conditions we can use. So this will compare two numbers accordingly, and then there will be assignment operator, and then there will be a equal operator as well. Okay, double equal sign will be regarded as equal. So based on the conditions situation, this expression will be executed. Okay, so if the condition will be true, this expression will be executed. If this condition will be false, this expression will be discarded, and it will go to the next instruction. So I will repeat again, I mean, because this is very important statement which we usually use in various occasions in C++. So this means there are three parts, namely if, then its condition connected with this if statement, and there will be an expression which is under that condition. If the condition will be true or false, then the expression will be executed. Okay, so, and the condition, as I said earlier, that they usually it is a comparison that we make there. If it is true, then this expression will be executed, otherwise not. Okay, and the instruction will go to the next line. So let us write one simple program with which we can understand it better. So we have seen actually in previous studies that there are arithmetic operations which we can use, okay, instead of all these comparisons. So we can also use arithmetic operators in this condition as well. So I would start from, actually it is better, I think, to write here instead of with the text, instead of writing with the pencil. So it will be more convenient for me. So main function I have started, and I have defined two integers like n and d, for instance. So what I am doing here, I want to see if n integer can be dividable can be dividable by d. Okay, so I will give you, I will give two numbers for n and d. The system will check the division. If it is divisible, it will let us know, okay, this is divisible. Otherwise, no. Okay, so I will demand these numbers from the computer. So you know that we usually write enter the numbers. So I will demand it. So I will use cin for n and then d. Now I would use if statement, and I would say that if n is divisible, so I'm using that modulus or remainder arithmetic operator, and I would use the condition that then it must tell us that cout n is
divisible divisible on D. That's it. Okay, so you will write that program, and what is actually happening? Okay, you will giving numbers to integer type data to n and D. For example, I am giving n 6 and D 3. Okay, so I have entered these numbers, and whenever it will check from this if statement, from the condition which we have provided, so this means that it will give us, when it will be divided, then it will be divisible successfully, it will be divided. Okay, so it is divided on 2. So then it will declare us that, okay, this condition will be then true if it is divisible. So this will become true, and then this statement will run. So Cout 6 is divisible on D. Okay, 3, which has been written there. Okay, if in case it is not 6, it is 5, and I have given 3, so what will happen to the condition? Whenever it will be divided, you cannot divide it. I mean, there will be a remainder. So this condition will be false, and this statement will not run. This statement will not run. The control will come to the end, and you will see nothing. Okay, you can also use another statement along with this statement that will be useful. If the statement will be false, then we can use it. We can tell to the system that, okay, this is not divisible. So you can write other statement as well here. So this is it. I mean for concerning the if statement. If you have any question, you can ask the question right away. Otherwise, we will go further. सर जी जोन सी लाइन आपने एनसर्कल की है, उसका मतलब क्या है? सी आउट डबल लेस देन साइन, फिर एन है, फिर डबल लेस देन है, और फिर इन्वर्टेड कॉमास है। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है सर? बेटा, ये जो डबल लेस देन है, ये आपको पता है क्या चीज है? सर कोई चीज प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं सी आउट डबल लेस देन। दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उस जबान में अब बात किया करो ना भाई मेरे। तो दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उसको तो छोड़ दो। ये एन की वैल्यू तो एज इट इज प्रिंट कर देगा। वो वही चीजें हैं, सादा चीजें जो हमने पहले कर रखी। तो वो एन की जगह पे उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा विच इज 6 और 5 वट एवर यू हैव गिवन, एंड देन इज divisible on will be printed as it is, and D will be give you again the number which you have entered. अच्छा, ये सेमीकोलन नहीं आएगा, कंडीशन के बाद नहीं होता सेमीकोलन। जो ये कंडीशन है, कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं होंगे, एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन आएगा। ओके, सो समझ आई है तुम्हें भाई जिसने क्वेश्चन किया था? सर सीधी पोजीशन तो सही से नहीं आई। नहीं, क्या मसला क्या है बच्चे, ये तो बताओ मुझे। मैं रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग सारी। उप्स, ओके, आई विल अरेंज दिस थिंग। हाँ, पूछो, बताओ, पूछो क्या मसला है। सर जोन से ऊपर हम इंट मेन वाला फंक्शन वो यूज कर रहे हैं, वो तो प्रिंट मतलब कर देगा जोन सा हमारा इंटर द नंबर हमने कहा है उसको। और यहाँ पे जो हम मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डबल लेस देन लगाना है या ग्रेटर देन लगाना है, ये वाला साइन एन के आगे या पीछे?
बेटा ये तो वो चीजें हैं जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो लगाना कहाँ कहाँ पे है। यही जो एक्सरसाइजेस करवाता रहा हूं तुम लोगों से मैं। अब ये लेस देन डबल लेस देन जिसकी बात कर रहे हो, ये तो इसको तो मतलब ही ये है कि आपने प्रिंट करवानी है कोई चीज, तो उसके साथ प्रिंटिंग स्टेटमेंट के साथ जो है विच इज सी आउट हियर, उसके साथ ये इस्तेमाल होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब जहां तक ताल्लुक n का है वो हमने क्यों करवाया, हमने ये बताना है कि हमने ये जो नंबर हमने एंटर किया था ये डिवाइडेबल है भी कि नहीं इसके ऊपर जो दूसरा नंबर है। अब उसके आगे पीछे जो लगाने का क्या मतलब है, ये तो वो बात कर रहे हो आप लोग के 5 लेक्चर्स के बाद आप लोग वही चीज पूछ रहे हो जो फर्स्ट डे हमने एक्सरसाइज की थी। ये कोई हेल्प करे इसकी भाई, जो इसको अगर किसी ने एक्सरसाइजेस की हुई है इसकी, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है और ये क्यों यूज करते हैं, हमने क्यों लगाया था, कोई हेल्प आउट करे इसकी। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। Okay, so next thing which is relevant to the if statement is actually a set of statements, I mean, which will be extension of this exercise, which we have just given, will be the that will be the extension to that if statement. Now another thing, I mean, I don't know if the screen is still alive, but yes. So another thing which we have forgotten here, I mean, let me start again that let me make that correction first and then I will switch to the next statement. यहाँ पर थोड़ी सी एक गलती की है हमने कि ये कंडीशन मुकम्मल नहीं थी, तो ये दोबारा से इसको जो है वो एक दफा लिख लें। that will make you I mean different results if you will write like this. So if हमने कंडीशन अभी मुकम्मल नहीं की थी, that is n%d, और कंडीशन इसमें ये है, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया ना, ये तो हो गया हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन कि वो रिमाइंडर ले ले। इफ द रिमाइंडर इज नाउ इक्वल टू 0, अब कंडीशन पूरी हुई है ये हमारी। ये थोड़ा सा मैं स्किप कर गया था यहां से अनइंटेंशनली। सो अब ये यानी कि ये नहीं है, ये स्टेटमेंट ये बेसिकली इस तरह है, अब ये स्टेटमेंट मुकम्मल होती है। वो ये है कि whenever you will have a remainder and it will be equal to 0, then it will be divisible। ठीक है ना जी। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा, फॉर एग्जांपल अगर 6 को मैं तकसीम करूं 3 पे, जो मैंने वैल्यूज दे रखी थी n और d की, सो दिस मीन्स के that will be the answer and you have remainder 0 which is important। अब रिमाइंडर अगर 0 होगा और वो कंडीशन यहां पे चेक करे कि यस दैट इज इक्वल टू 0, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट सी आउट वाली। अगर यहां पे रिमाइंडर में कोई चीज बच जाती है, फॉर एग्जांपल आई हैव यूज्ड 5 इंस्टेड ऑफ 6, सो ये 1 पे तकसीम होगा और 2 बच जाएंगे। ठीक है जी। सो रिमाइंडर विल बी 2 विल बी चेक्ड इन दिस कंडीशन। सो 2 इज इक्वल 0, दिस इज नॉट ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट विल नॉट रन, कि वो डिविजिबल है। ठीक है जी। अब कंडीशन यहां पे अब पूरी हुई। So make these corrections to your previous program, and then I will switch towards the extension of this if statement। यार लिखवा के तो ले आया कर अल्लाह के बंदे, मुकम्मल करके ले आया करो। Okay, so let us go towards the extension of if statement। I'm removing everything and we will write this program once again। So I'm clearing all of the drawings, and that is actually if else statement। Okay, so this is a
extension, I mean, this is further, I mean, even more useful if you will use this if statement. And तरीकाकार क्या है उसका? So you will use keyword if, you will check the condition, and depending on that condition, there will be expression which we can use. Expression 1 I will call this time, because if this will not be true, then I can use else keyword, and it will then run other expression. ठीक है जी. अब होगा क्या कि you have written if statement with some condition. If the condition will be true, okay, if the condition will be true, then this expression will run, then this expression will be executed by the compiler. Otherwise, if this condition is false, then this expression will not be executed. वो क्या करेगा? कंट्रोल कहां जाएगा? कंट्रोल आ जाएगा else के ऊपर. Now you have another expression with else. Otherwise ये expression जो है वो चलेगा false की सूरत में ना. Expression 2 जो है that will be executed after the compilation. So this means if it is true, then this expression will be executed and it will leave this expression. ये इसको छोड़ देगा. But if it is false, then this will be discarded and this statement will be executed. So let us write that same program once again. That is, I will start again from the main function. And we have defined two integers n and d, where n is actually a number which is going to be divided, and this is the divisor, d is divisor, okay? Okay, so again I will demand these numbers from the computer. Enter the numbers. Cin. So इसमें हमने क्या किया था कि n और d दोनों में ये expressions को हमने सेव कर लिया. Okay, so what it must do now, you will check the same condition. If n percentage sign for that remainder d is equal 0, then what it must do? It must execute expression that cout n is divisible by d. Okay, else अगर ये false हो जाए, so it must write cout n is not divisible by okay, so this is what you have extended form of that exercise which we have done previously for only if statement. अब यहाँ पे क्या किया हमने? We have defined two integers again,
and we will give them the numbers. So वो n में और d में store हो जाएंगे. Now in this condition, if n% d means के वो उसको divide करके देखेगा, if the remainder will be 0, then this statement will be executed because it will be true. ठीक है जी. In otherwise, I mean in another case, if this will be false and there is some remainder जो कि बच रहेगा वहां पे, तो वो क्या होगा कि इस स्टेटमेंट को वो डिस्कार्ड कर देगा और वो सीधा आएगा एल्स के ऊपर. एल्स के साथ जो स्टेटमेंट है वो वैसे की वैसे प्रिंट कर देगा. सो इट विल से दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय दैट नंबर. Okay, so this is the difference between if and if else statement, and definitely I mean if else is more suitable or more appropriate and more useful if we will use anywhere whenever we have a requirement of using the if statement. Okay, so if you have now further question, you can ask the question once again. सर इसका आयो स्ट्रीम सर वो उसी तरह लिखेंगे सर? जी बेटा, वो जो मस्ट टू डू चीजें हैं वो मैं बारहा कह चुका हूं और बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एब्सलीट हो गई चीजें, वो खत्म हो गया वो काम. वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए चीजें कि वो क्या करना था हमने. ये बार बार नहीं बताऊंगा, टाइम जाया करने वाली बात है. आपको सिर्फ लॉजिक में दे रहा हूं, लॉजिक के अंदर रहते हुए आप लोग जो है वो चीजें देखते जाओगे. ओके सर, ओके सर. सर अगर हमें कुछ मैथ की चीजें चाहिए हो, मतलब मैथ की कुछ चीजें हमें ऑपरेटर वगैरह यूज करनी हो, तो फिर हम मैथ की लाइब्रेरी भी यूज करते हैं ना सर. तो वो सर हमारा अगर आप कह रहे हैं कि आया स्ट्रीम वो तो परमानेंट रहेगा, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि मैथ की लाइब्रेरी तो हम ऐड भी नहीं करेंगे अगर हमें जरूरत भी हुई तो. मैथ का कौन सा काम यहाँ पे तुम ऐसा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से मैथ की लाइब्रेरी को कॉल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल बताओ सर. कोई हमें अगर इंटीग्रेशन वगैरह करनी पड़े तो? बेटा वो करनी पड़े तो वो जब टाइम आएगा तो आपको बताया जाएगा. But for the arithmetic operators, for plus, minus, divide and so on, you don't need to upload the math library. वो जब टाइम आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा भी सही कि वो कैसे करेंगे उसको. और इंटीग्रेशन के लिए जो है वो पहली बात तो ये है कि इंटीग्रेशन ये कभी भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करके दे सकता कोई भी प्रोग्राम, कोई भी लैंग्वेज. वो आप उसके लिए स्पेसिफिक मेथड यूज करते हैं जो हमने स्टडी करने. लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हो जिसमें कोसाइन और साइन फंक्शंस वगैरह हैं, तब आपको मैथ लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है. एंड व्हेन यू विल दैट टाइम विल कम, आई विल लेट यू नो गाइस. यहाँ पर पहले ये समझना और सीख लो कि प्रिंट कैसे करना है, ये तुम्हें पता नहीं है और बातें तुम जो है वो बड़ी बड़ी कर रहे हो. है पहले ये बेसिक सीख लो तो उसके बाद आगे चलना. अच्छा जी, नाउ लेट अस see another example where we are comparing actually, I mean with the if statement as well. So we are comparing things up. So for example, as I said earlier, that in condition there will be several operators which you can use. I mean less than, greater than, or so on. You can also use that, as we have already studied the assignment operator. This equal operator. Okay, so we have already used it. So that comparisons are called relational operators. Relational operators. So ये relational operators क्या हैं? Those are, for example, less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to. ठीक है जी. और equal to sign हम also, we can also use that one. तो ये relational operators हैं. So with the combination
विद अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे अरिथमेटिक्स भी यूज किए हैं ना, ये n%d बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन है, which in combination with the relational operator we have used that facility. तो एक छोटा सा प्रोग्राम और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको रिलेशनल ऑपरेटर को, which number is actually greater. तो let me show you that program where we have seen that which operator is actually sorry, I have closed the screen actually. Okay. Okay, well, let me remove this. So अब हमने चेक ये करना है कि which number, we will enter two numbers and we will see which one is greater. Okay, so I would start once again from the main function और दो इंटीजर्स जो हैं उनको मैं डिफाइन करता हूं जहां के, फॉर एग्जांपल n and m. क्या मसला है इसको, n and m. Okay, and I want from the computer to print that to ask these numbers. So enter two integers. एक हम n के अंदर कर देते हैं सेव, दूसरे को m के अंदर कर देते हैं. Okay, so I will put now the one condition here. M is greater than n. Simple is that. ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा अपॉन इट इज ट्रू, देन इट मस्ट प्रिंट दैट सी आउट m होने चल ठीक is greater than n. ठीक है जी, else वो क्या करे, उसका उलट हो जाए कि n will be then the greater than. लेकिन ये ट्रिकी है, इसके अंदर अभी भी हमें बहुत सारी चीजों का जो है वो हमें ये गलत रिजल्ट भी दे सकता है. बट फॉर सिंपल इज दैट आई एम गिविंग यू अ स्मॉल इलस्ट्रेशन ऑफ दैट आइडिया के ठीक है जी. सो दैट विल बी द प्रोग्राम. अब वो क्या करेगा, इस प्रोग्राम के तहत हमने कंडीशनल ऑपरेटर यूज किया विच इज ग्रेटर देन हियर. So you can use, I mean, in several examples, you can make the exercises use other relational operators as well. हमने यहाँ पे दो नंबर्स दिए हैं n और m को, हमने जो है वो कंप्यूटर से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो पूछेगा. Now if m is greater than n, अब वो चेक करेगा नंबर्स को. For example, I am giving n 2 और m को मैं वैल्यू दे देता हूं 5. ठीक है जी. So this will check, okay, 5 is greater than 2, so this is true. Okay, so this statement will run, this one, and this and the other one will be discarded. लेकिन अगर मैं उलट नंबर दे देता हूं इनको, कि मैं कहता हूं कि 5 जो है वो n के बराबर है और 2 इसके बराबर है, this statement will be false and this statement will be then discarded. ये वाली प्रिंट आउट होगी. ठीक है जी, समझ में आई ये बातें. Okay, you have now various exercises, I mean, in combination with these exercises which I have given you. तो if statement वाले जितने भी examples आपकी बुक में मौजूद हैं वो लाजमी जाके exercise उसको करेंगे. तो by the end of this week, most probably I will give you, or in coming few days, I will give you some of the assignments, which is not actually assignment, it is like an exercise to do. तो आपने वो exercises जो हैं वो करनी है.
ये कमर अब्बास ने कुछ कहा है which I cannot understand. Open your mic. कमर अब्बास. यस सर, वो कोई फार्म के बारे में पूछ रहा था, तो वो सर टेक्स्ट उसको मैंने रिप्लाई कर दिया। वो कह रहे थे कि फार्म के बारे में लास्ट डेट बताएं। कौन से फॉर्म के बारे में भाई? वो सर कोई रिटेक वाले चालान के फॉर्म के बारे में पूछ रहे थे, तो उसके बारे में बताया कि आज लास्ट डेट थी तो खत्म है उसके बारे में। तो बेटा दिस इज नॉट अ फोरम जो आप व्हाट्सएप पे किसी अपने ग्रुप में ऑफिशियल ग्रुप में करते रहो। यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल गिव यू सम ऑफ द टेक्स्ट किया है, मैंने रिप्लाई किया है। और ठीक है भाई, ठीक है। सो I will give you some of the exercises, so you will do concerning the previous increment decrement operators, and then the operators so far we have studied along with this if statement. I will give you some of the programs, 10-15 programs, so you have to exercise them. I will give you only the statements, you will write yourself. तो अब ये वो सीखने वाला जो काम है वो अब थोड़ा सा अगले मदार में दाखिल हो रहा है, एक्सपर्टीज के मदार में। तो आप लोग इसकी एक्सरसाइजेस जारी शुरू कर दें, अदरवाइज दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स एज फार एज यू विल स्टडी फर्दर फंक्शनैलिटीज ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है जी। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीक फॉर C++. सो फ्रॉम टुमारो वी विल हैव other classes of physics of nanotechnologies. So we will see. I will see you tomorrow at the same time. Allah Hafiz.